Hello everyone. Today I am gonna teach you about the Peninsular Mountains of India. So it's a second part. Let's get started. Let's start from Tamil Nadu. So in Tamil Nadu we found different hills. So the first hill is Javadi Hills. So Javadi, in the southern part of Javadi Hills you find the Chevroy Hills. एंड देन आपको यहाँ पर आपको पंचमलाई हिल्स करके एक हिल्स मिलेगा. देन इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु यू फाइंड टू हिल्स. वन इज पालानी हिल्स एंड अनदर इज सिरुमलाई हिल्स. So when you move to the southern part you find another hills called Varshanadu Hills. So अगर देन आपको अगर और एक हिल्स मिलेगा जो इसके साउदर्न पार्ट में तमिलनाडु के साउदर्न पार्ट में आपको और एक हिल्स देखने को मिलेगा जिसका नाम अगस्त्यमलाई है. जो आपने सुना होगा ऋषि अगस्त मुनि करके, उसके नाम पर ये हिल का नाम रखा गया है अगस्त्यमलाई. सो आपको याद हो गया होगा शायद. फर्स्ट इज जावडी, सेकंड शेवरॉय, देन पंचमलाई, देन पालानी, देन शिरुमलाई, देन वर्षानादु हिल्स एंड लास्ट वन इज अगस्त्यमलाई. So tell me what's the first hill? What's the name of the first hill? So number 1 क्या था? थोड़ा टाइम लेकर के आप इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. So number 1 Javadi Hills. Number 2 Chevroy. देन यहाँ पर क्या था? क्या था यहाँ पर? यहाँ पर पालानी हिल्स था. देन यहाँ पर नंबर 4 पंचमलाई, नंबर 5 सिरुमलाई, number 6 Varshanadu Hills and number 7 is Agastyamalai. So move on to the Andhra Pradesh. You see the highest peak of Andhra Pradesh, which is Armakonda. It is also called Aryakonda or Sitamakonda. So you see hills in the border between Telangana and Andhra Pradesh, which is called Nalamala Hills. So आपको और एक हिल्स देखने को मिलेगा यहाँ पर. सेचाचलम हिल्स करके एक हिल्स मिलेगा यहाँ पर, सेचाचलम. So you find another two hill range here. One is Velikonda range, another hills is Palkonda range. Konda matlab? Here Konda means hill. In Telugu Konda means hill. So one is Palkonda and the is Velikonda. And what is the name of the highest peak? Armakonda or Aryakonda or Sitamakonda. So let's do practice here. So what's the name of these hills? Number 1 it is Nalamala Hills. Then number 2 is Setachalam. Number 3 is which is the highest peak? The name of the highest peak Armakonda or Aryakonda or Sitamakonda. So
What's the name of these two hill range? One is Palkonda and the other is Velikonda. So Konda means hill. In Telugu, Konda means hill. Remember that. So in Orissa, you see the Garjad hills in the northern part of Orissa. Then यहाँ पर आपको मलयगिरी करके एक hills मिलेगा. So in the southern part, you see another hills like Mahendagiri and Devrimunda. So Devmali peak करके So Devmali peak is the highest peak of Orissa. So आपने यहाँ पर क्या पढ़ा? First Garjat hills, then Malaygiri hills, then in the southern part one is Mahendagiri, another is Devrimunda, and Devmali peak is the highest peak of Orissa. So इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. अगर मुझे बताइए नंबर 1 क्या होगा? Devrimunda, right? Number 4, Malaygiri, yes. Number 2, what's the name of these hills? Garjad hills, and then it is Mahendagiri hills. So आप मन में ही सोच लेना जब मैं ऐसे नंबर, अगर आप ऐसे करके याद रखने का ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा देर तक ये हिल रेंजेस के नाम याद हो जाएंगे. So it is just a technique to learn the names of the hill ranges more effectively, right? The more you practice, the better you learn, the better you remember. So move on to this Chhattisgarh. In Chhattisgarh, you find Ramgarh here, Ramgarh Hills, जो आपको शोले फिल्म में देखते हैं, शोले के रामगढ़ के शोले. Then this is दंडकारण्य. यहाँ पे आपको मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे. Then in the southern part you see another famous place or hill, that is Beladela. So मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये बेलाडेला क्यों फेमस है. चलो मैं एक हिंट देता हूँ आपको. ये एक मिनरल के लिए बहुत फेमस है बेलाडेला. किस मिनरल के लिए ये फेमस है बेलाडेला, राइट? सो ये शायद आपको याद हो ही गया होगा. ये होगा बेलाडेला, ये होगा दंडकारण्य, एंड दिस इज रामगढ़ के शोले, राइट? सो ये तो झारखंड में आपको टू डिफरेंट हिल्स मिलेंगे. लाइक एक होगा परसनाथ एंड दूसरा होगा राजमहल हिल्स. सो ये इट्स वेरी इजी आई थिंक. ये परसनाथ, ये राजमहल हिल्स. Then let's do some practice, right? So practice makes perfect. So it's a very simple question, and you should try to put the answer of this question in the comment below. So what's the question? So the question is, arrange the following from north to south. So number 1 is Chevroy, number 2 is Mahendragiri, number 3 is Palani, then Palkonda. So आपको क्या करना होगा, आप इन हिल्स को आपको
नॉर्थ से साउथ तक अरेंज करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? नॉर्थ से साउथ तक। बट इफ यू फाइंड डिफिकल्ट देन फिर से देखिए वीडियो को, आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे। And if you find any difficulties or if you face any problem, just ask me in the comments and I'll be there for you. I'll give my full support.